First part he says define pressure. So pressure के लिए तो we can just write the formula in words कि force per unit area. Yes. Use the answer to A part 1 to show that SI base unit of pressure are this. So अच्छा so फोर्स का हम पहले एम ए लिख देंगे उसको एम ए वो होके के जी इंटू मीटर पर सेकेंड -2 हो जाएगा ओवर एरिया का मीटर स्क्वायर लिख देंगे सो मीटर स्क्वायर विल कॉज द अपर वाला टोटल में मीटर हो जाएगा m टू द पावर -1 सो बन जाएगा के जी m -1 s -2 लेकिन आप इसको सॉल्व कर रहे हो साथ। असल चीज ये है कि आप मेरे साथ इसको फिर सॉल्व करो, क्योंकि ये जो मैंने बताया ना, विजुअलाइजेशन इस वक्त सबसे बड़ा, दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एज पेपर्स गेट क्लोजर, पीपल जस्ट लाइक unconsciously shift on visual papers. They just like keep on looking the solutions or marking scheme and just do that. नहीं सॉरी मैं सॉल्व आई स्पीकिंग टू मच वो एक्चुअली पेपर कर करके आदत हो गई है सो आप करें मैं बस आपको देख अब आगे बताओ। अच्छा horizontal pipe has length and circular section of radius r city mass of side base units of k ठीक है इसके अंदर सर हम पहले साइड पे लिख लेते हैं कि सबके क्या क्या यूनिट्स हैं और वी स्टार्ट विद आर का यूनिट मीटर में है आर इज मीटर और लेंथ का Horizontal भी pipe of मीटर length SI बेस यूनिट ऑफ के, तो इसमें जो कोई कांस्टेंट्स हैं तो उनको हटा देते हैं, हाँ जी बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर यूनिट। तो पाई हटा दो, P2 माइनस P1 को खाली P ले लो, इट्स अ प्रेशर। So what about pressure? The unit of pressure we found kg m minus 1. yes that's -2 And resistance, what is R? no this is not resistance this is radius Okay, radius, good. It's meter. I'm just coming. Please solve it. yes sir.
So can you have you solved it? Yes, sir. It's kg s to the power minus 1 meter to the power minus 1. Okay. An experiment is performed to determine the value of K by measuring the values of the other quantities in the equation in B. The value of L and R each have a percentage uncertainty of 2%. State and explain quantitatively which of these two quantities contribute more to the percentage uncertainty in the calculated value of K. So ये जो question होता है, we always have to see numerator and denominator. So L and R, L is in the denominator. So you can say to examiner that look, K is proportional to L, inversely proportional to L, and K is proportional to R power 4. L पे कोई पावर नहीं है, R पे पावर 4 है. तो कौन ज्यादा मैथमेटिकली who will be more contributing? Yes. बताओ, R power 4 will be more contributing or K will be more affected by L. L has no power. Sir, R will be common. Yes, because जो powered functions होते हैं mathematically, the powered functions are always more affecting because उनमें अगर आप इसको अगर आप डबल भी करेंगे तो ये तो पावर 4 तक चला जाएगा. State what is meant by the center of gravity of an object. Sir, the point of an object where all the weight of the object is taken to act. Taken to act. Very good. And the two blocks are on a horizontal beam that is pivoted at its center of gravity as shown. A large block of weight 54 Newton is a distance of 0.45 meter from the pivot. Sir, have we done this paper before? I don't remember that first question, but the second question might be. Maybe The I'm second not. looks familiar. I think we might have done it from some basic past papers. इसके अंदर आगे और repeated values changed numbers. तो अगर किया भी है तो ये रिपीटेड, ये देखो इसका अगला पार्ट भी प्रोजेक्टाइल वाला है. मे बी आई फील कि किया हुआ है. जी, I have the same feeling. First one was not recognizable. The second and third one look familiar. तो यहां से कर लेते हैं नंबर 3. A block is pulled by a force X in a straight line along a rough horizontal surface as shown in the figure. Assume that the total resistive force opposing the motion of the block is 0.80 Newton. Okay. अब इसको पढ़ो. So, पढ़ लिया. My question पे आप कर लें. Scroll. Can you scroll down a bit? Define force. Force is the rate of change of momentum. Change of momentum. Force is the rate of change of momentum. Yes. अगला. So आप अगला scroll down कर लो. Determine the change in momentum of the block from 0 till 3.
0 पे फोर्स है 1.2468 1.4 फोर्स यस इज बिल्कुल 1.4 एंड हम इसको कैसे करें? देयर में चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, इसने दिया हुआ है फोर्स अगेंस्ट टाइम। जी। और 3 पे हमारे पास गिवन है 0.8 फोर्स। हाँ, हमारे पास फोर्स है, राइट। अब हम इसको फोर्स से कैसे करें? तो दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। नहीं दोनों का डिफरेंस निकालूं? अच्छा, लेकिन उससे तो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगी। फिर आगे प्लान बनाओ। सोच रहा सर। इसका मैथ्स क्या है ब्लॉक का? सॉरी, मैथ्स हमें गिवन है मैथ्स। मास, नहीं नहीं the the total resistive force opposing the motion of the block is point at all speeds of the block. या तो हमें वेलोसिटी निकालें। एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन अब यहाँ मसला ये है, वही मैं या सोचा मैथ्स की मैंने। हाँ, लेकिन वो एक फॉर्मूला और है ना, अगर हम उसको रखें तो F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो डेल्टा पी होता है एफ डेल्टा, टी बिल्कुल 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 एफ टी मेरे दिमाग से कैसे स्लिप किया है। लेकिन वी कैन। इसको लाए तो F इंटू टी है। अब F जी इंटू जी। टी ग्राफ में तो देख के लग रहा है कि वो एरिया है। And so we can just take the difference of 1 4 and 0.8 and multiply the answer with 3. देखो, इट्स एन एरिया ऑफ दिस स्केच। Yes. Equal, sir. But can we not just subtract 1.4 from 0.8 and then multiply the answer with 3? इससे हमारा change in momentum से ना फोर्स टाइम व्हेन टू क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड, yes तो उसका जो एरिया होता है वो उसको शो करता है ना। एरिया क्या चीज होती है, सोचो। एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू एक्सीज, बिल्कुल gradient is the ratio of the two axes. yes. So this is the area. Area is always the product of the two axes. So what do I do now, sir? तो आप वो जो मतलब एरिया निकाल दो ना इसका, ये तो इसकी वो है ना, आप जो बता रहे थे कि ये 0.8 है, मुझे ये वाला ये रेक्टेंगल है ना। हाँ जी बिल्कुल 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 मेरी यही दरख्वास्त है। I understand. 0.6 आता है 0.6 into 0.3. That's why I got 0.3 normal. 6 into 3 is 1.8. How much is 1.4 minus 0.8? 0.8 is 1.4 minus 0.8. 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 0.8 is 1.4 minus 0.8
So 1.4 minus 0.8 is 0.6, and then I multiplied 0.6 with 3. The answer is 1.8. Right. G. Describe and explain the motion of the block between time 3 and time 6. 3 and 6 के बीच में 3 और 6 के बीच में लगता है कि वो जो ड्राइविंग फोर्स है that force has gone because look at this 0.8 तो resistive force है G. और 6 के बीच में आपको इस रेंज में कमेंट करना है इस रेंज में This way. 3 to 6. So 3 के साथ इसका निकाल. रितनी आपको सिर्फ कमेंट करना है द लाइन इज हॉरिजॉन्टल Yes. if the line is horizontal the force it means is constant. So you'll write the resultant force on the block is 0, so the velocity should be constant. और ये है कौन सी फोर्स कांस्टेंट दूसरी फोर्स अब नहीं लग रही कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स ऑफ 0.8 न्यूटन. Yes. Acceleration is equal to 0 and resultant force is equal to 0. So velocity is constant. Resultant force is 0, so velocity is force X produces a total power of 2 watt when moving the block between 3 seconds and 6 seconds. Calculate the distance moved by the block during this time interval. Yes. Okay, G. Power is equal to FV. to V. So we have power, we have the force. What is power? Power 2 watts बिल्कुल हमें दिया हुआ है और हमने डिवाइड करना 8 से जो मैं 2 divided by 0.8 is 2.5. Sorry, 2.5. Yes. Speed is constant. Time Yes. interval 3 to 6. And जी तो 3 आ गया बिल्कुल डिफरेंस इसका 2.5 हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ and 7.5 आता है आंसर. Then obviously we are solving in a domestic environment, but that paper ruined a lot of people, and there are a good number of people, a huge number of people are sitting back because of this paper. The block is at rest at time t is equal to 0. Sketch a graph to show the variation of the momentum of the block with time t 0 till 6. Numerical values are not required. So ब्लॉक जो है वो 0 टाइम पे रेस्ट पे था. देखो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि फोर्स शुरू में जो फोर्स है वो है 1.4 न्यूटन. तो शुरू में there was a driving force. You have to read the starting story. Yes, sir. Sir, I also have another question.
जो पिछले साल अक्टूबर नवंबर का थ्रेशोल्ड था वो बहुत कम था रिलेटिव, इट जून वाज का, अबाउट नहीं से नवंबर का नवंबर का तो कम होता है हमेशा। कम होता है हमेशा। आई एम फीलिंग इस दफा स्पाइक ना करते हैं बिकॉज ऑफ दिस सपोज्ड न्यू पर मार्किंग चेकिंग। वो तो मैंने आपको 2-3 मरतबा समझाया है, वाई पीपल आर द ऑल पीपल इन द सिटी इन द कंट्री आर सिटिंग बैक। उसमें मेजर इंसेंटिव ये है कि थ्रेशोल्ड गिरेगा ना, बिल्कुल बिल्कुल।